or exponents. So we can say whatever you want to. So they are just two things that means the same thing. So just a different name given to that. All right. So before directly starting to the class, let me tell you something about the platform Swiflearn. So what is guys Swiflearn? What do we do here? Anyone who knows what is it? Yeah, the regular students really know what is it all about. But in case you think you don't know and you have joined for the first time, I'll tell you what this platform is. So Swiflearn platform says that we try harder. So here we try harder is for the teachers. So here the teachers has to work really very hard to teach you lovely students. So when I'm sitting here, I've worked a lot beforehand. I'm prepared with whatever I want to teach with you, and then only I'm coming and giving you this session. So यहाँ पे teachers भी work करती हैं बच्चों के साथ. क्यों करती हैं? क्या reasons हैं? There are some parameters that teachers need to satisfy, and there are some rules that makes themselves to do it automatically. तो यहाँ पे teachers को automatically करना ही पड़ता है, कोई option ही नहीं है. Okay. So what are the parameters? Let's see that. So first is it's 100% live and interactive class. So right now I'm live with you all. You can see me here live at the YouTube. You can say hi, good afternoon, whatever you want to do in the comments. I'm here to read that out. Secondly, there has to be an interactive class by saying that I'm asking you to reply to my things. Similarly, in the class, we have to make the class interactive. We have to keep on asking the child, have you understood? Or indirect questions by which we also get to know that yes, you have understood or not. Why, how, and how effective it can be when the students are less. ये तभी हो सकता है जब कम बच्चे हो, right? इतने सारे बच्चे होंगे तो हो सकता है? No. So that is why we are saying that we have a batch with maximum of 6 students. Yes. The whole batch will only have maximum of 6 students where we can interact और जो भी थोड़ी प्रॉब्लम हम easily पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, right? So जब इतने कम बच्चे होंगे और हमारे फ्रेंड्स ही होंगे तो उनके साथ हम पूछ सकते हैं अपने डाउट्स मैम से और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा होता, right? फ्रेंड्स के सामने तो कुछ भी नहीं छुपता. Yes, that's true. So that's the point that we don't think that you hesitate. आपको एक प्रॉब्लम है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो इसलिए हमने बैच ही कम कर लिया, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी ही नहीं. Third point is there is an academic mentor team that keeps a track of work of students' progress. तो एक टीम है जो already dedicated है, जो first day आपके enroll होते ही, आपकी trial class book होते ही, उनका work शुरू हो जाता है. So what they do, they see your classwork, your homeworks, your assessments, how quick you are performing, how are you replying in the class. So each and everything is taken into account, and then only they make a graph and let us know that the child is sincere, he is understanding or not. So this is a clarity. ये teachers के लिए भी क्लैरिटी है कि बच्चों को समझ आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव हो रही हैं. सिमिलरली इट्स अ क्लैरिटी फॉर यू पेरेंट्स which are watching here. So it's very easy for you guys and for you parents to know that your child is improving or not because there is a statistics graph that keeps us showing कब आपके बच्चे ने enroll किया था और अब वो कितने टाइम बाद उसकी परफॉर्मेंसेस कैसी हो रही है. तो ग्राफ will let us know each and everything. तो कोई भी एस्पेक्ट हम नहीं मिस कर पाएंगे उससे. Okay, we also cover syllabus as per school exam schedule. So it's very easy, parents, if you think that whatever we are teaching, it may not be related with the child. So here we make sure that you just let us inform the children's and you, any one of you can inform us that yes, we have a test. After a week or something, we'll make it sure that we have covered that syllabus. तो हफ्ते बाद भी होगा तो भी हम उसको कवर करेंगे उस टॉपिक को, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद उससे असेसमेंट्स भी करवाएंगे ताकि स्कूल रिजल्ट अच्छा. So you know that we are working and the child is also improving. The result is important. We also understand that. We also handle custom requests by saying that if you think that this is a course which already has a lot of things, but little more about universe if they could have added, so it becomes a complete course for my child. So not a problem. You just let us know. We'll add those topics that you think are a little incomplete. We can add that and make it customized according to your preference and the child's requirement. So when everything is about education, जब हम सब कुछ पढ़ाई के बारे में ही बात कर रहे हैं guys, so sincerity तो है ना, प्लेटफॉर्म पे है और यही प्लेटफॉर्म ने अपनी सिंसियरिटी को प्रूव करके इस नेम पे आए हैं कि इट्स नोन फॉर इट्स सिंसियरिटी एंड इट्स नोन एज इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन. यस, इट्स नोन फॉर इट्स सिंसियरिटी एंड इट्स वर्ल्ड वाइड नोन दैट इंडियाज मोस्ट सिंसियर प्लेटफॉर्म कौन सा है? Swiflearn, yes, and we teach from classes 1st to 10. So whoever is there for 1st to 10, you can come quickly, join the class and go and book a free trial class. Very important, I'm repeating myself, free trial class. Trial class is absolutely free. You can go and book it and you can see जो भी मैं कह रही हूँ वो सच है या नहीं. So you can go and check. If you think that yes, it is true, then you
कैन कम बैक एंड कमेंट. अब कम बैक और कमेंट करने का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तभी है जब इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आप इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म के चैनल से, जो कि स्विफ्लर्न प्लेटफॉर्म का यूट्यूब चैनल है, उससे आप कनेक्टेड रहोगे. तो जो भी टीचर आ रही होगी अपडेट वो आपको बता सकते हैं. So let me come back and revise once again quickly, not going into depth. What are the key features? It is a detailed progress report. So it's a statistics graph that keeps on going up and down, 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 down. So it's a red alert, turn, turn, turn. So we got to know that yes, the child is not performing up to the mark. Maybe it's a drop. Is human. It can commit mistakes. But now it's an alert for the teacher to make sure that the topic is clear and the child knows it. There is a Swiflearn academic test series that is SATs. By this SATs, what is happening in the SAT exams, we all around the world, our students are sitting there and doing this exam. So we know exactly where do we stand throughout the world with so many of students. Not only just restricting ourselves to the tuition centers or the platforms that we go to, or just restricting ourselves to the class, the school classes. Okay, so not 150, we are not competing with them. In real life, we are competing with the whole world. Similarly, the SAT exam is for the whole world. Alright, और अपनी परफॉर्मेंस अगर अप टू द मार्क नहीं है और बेटर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? देयर इज एन अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दैट यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, नो लिमिट. Keep on practicing, increasing your SAT scores. And if it's very good, you get the scholarship as too. So just move ahead towards it. Okay. And this practice test has both subjective as well as objective tests. Subjective कौन से होते हैं? जो school exams में होते हैं guys, जो आपको लिखने पड़ते हैं. Those are called subjectives. So we make sure that we are not giving you multi-choice questions only. We are making them you to practice and write the answers with the reasoning too. तो यहाँ पे हमारे को answers upload करते हो, हमारे को मिलता है, हम उसके अंदर proper हर एक टीचर एक आंसर चेक करती है, रीजनिंग बताती है कि अगर ये चीज नहीं करी तो हाफ मार्क कट सकता है, और ये चीज करी है तो इट्स गुड, यू हैव सेव्ड दैट मार्क. सो ईच एंड एवरी ऑफ दीज डिस्कशंस व्हिच इज नॉट टॉट एट एनी अदर प्लेटफॉर्म, वी मेक श्योर दैट वी टीच आवर स्टूडेंट्स हियर. Okay, so last and not the least, it's very important to subscribe to the channel, press on the bell icon so that you're connected with the platform. And next topic, जब भी मेरे session का next आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? I'm not telling you right now, it's a suspense. So for that you will get a notification so that you can be free at that time. And there are so many good teachers at the platform, at the YouTube, which are coming here and teaching you. So you can enroll with subject to your class and your subject IDs and your classes and subscribe to it so that you can get the update and you can be free. YouTube पे कनेक्टेड रहने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है गाइस, अगर आप इस टाइम 8th पे हो बट आपके कोई टॉपिक 7th के भी क्लियर नहीं है, बट आप प्लेटफॉर्म पे तो 8th का इनरोल कराओगे, राइट? बट नाउ व्हेन यू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन, देयर आर सम टीचर्स व्हिच आर कमिंग हियर, देयर आर मेनी टीचर्स व्हिच आर कमिंग हियर फॉर साइंस एंड इंग्लिश एंड फॉर ऑल्सो फॉर मैथ्स. फॉर 7th grade यू कैन गो एंड रिवाइज दैट टॉपिक ऑल टुगेदर. तो हम पिछला भी रिवाइज कर सकते हैं और आगे भी पढ़ सकते हैं और 9th का भी पढ़ सकते हैं. Right? So that's why we are saying just subscribe to the channel, press on the bell icon. It's just for you. Alright, so let's start with the topic today. What is indices? Indices 1 first session है, इसलिए 1 लिखा हुआ है. और indices होता क्या है, हम आज हम ये पढ़ेंगे, law of indices. So let's revise and let's get to it. What are indices? So for indices, the objective for today's class is that we'll understand and define and explain what is a base, what's a power. We'll also understand the walls around the rules of the laws of the indices, and we'll simplify some of the expressions. तो हमने जो laws ली हैं उनको questions को कैसे simplify करते हैं, we'll talk about this. So everyone who's there, can you say hi to me please, or good afternoon, whatever you want to, just a one so they can take out your name and I know you're there connected with me. Alright, so here we go to read these terms. How do we read this term? Anyone know? नीचे 10 है, ऊपर 2 है, तो मतलब 10 के ऊपर कुछ है, right? There is something on the top. So that's why we say raised. कोई चीज ऊपर होती है उसको बोलते हैं ना टॉप पे है, इससे ऊपर है तो वो रेज है. 10 से रेज्ड में है, so that's why it says 10 raised to the power of 2. कुछ 10 से ऊपर लिखा हुआ है और वो क्या लिखा है, power of 2, the number that is written. So power of 2, that is how we read this. So anyone who can read this, I know you can read it at the bottom, but still if without reading that, can you read it? Yes, it's 2 and 5. 5 is little up, so we say it's 2 raised to the power of 5. I hope it's clear. It's very easy.
या सो सिंपल जो बड़ा सा नंबर होता है हम उसको लिखते हैं, छोटी सी चीज को थोड़ा सा ऊपर लिख के स्मॉल में लिखते हैं, नॉट एक्जैक्टली एज बिग फॉन्ट जो हमारा इसका है। तो 10 और 2 का आप देख रहे होगे फॉन्ट्स दोनों साइजेस डिफरेंट है, हमने 10 को बहुत बड़ा लिखा है, 2 को छोटा लिखा है, बट उसको हमने थोड़ा सा रेज होके थोड़ा ऊपर स्टैंड पर लिखा है। दैट इज व्हाट द टॉपिक इज एंड दैट इज हाउ वी राइट इट। तो लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही लिखना है आपने। 10 to raise to the power 2, we call it 2 raised to the power 5. This is how we read it. All right. So now what is it? What can you anyone read what is written there? 10 and 2. How do we read it? If you know how to read, give me a thumbs up so that I know. And if you don't, then I'll let you know how to do it. All right. So we read this as 10 raised to the power of 2. Perfect. Good. So by saying 10 raised to the power of 2 means the number is being multiplied by itself. By saying that it's being multiplied, let me teach you one of the things that we have already done. So a very quick revision, what is actually this all thing is and why are we studying. All right, so I've made this whiteboard so that I can write it with any of the colors. So I'm writing with 10, okay? So let's go back to the childhood. जब हम छोटे थे हम क्या करते थे? Let's go that. जब हमने simple करा कि हमने 2 plus 2 करा, we got answer 4. Then we realized that when we keep on adding the same number, what did we invent? We invented 2 into 4, then we got the same answer at 8. That is what is multiplication, guys, right? When we keep on adding the same number again and again, we move to multiplication. But in terms of indices, what is happening is here we are just multiplying the same number. अभी तक पहले क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे, जब हम उनको क्या बोल दिया कि मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना? ये देखो हमने ऐड करा 4 टाइम्स, तो हमने उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। बट नाउ व्हाट आर वी डूइंग? वी आर मल्टीप्लाइंग। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको कैसे अलग करेंगे? अगर हम एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करी जाते हैं, मेक इट श्योर दैट इट्स जस्ट द सेम नंबर गाइस, ओके? हम एक ही नंबर को बार-बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देयर इज व्हाट वी गेट द indices or the exponents. We can write 2 raised to the power of 4. 2 raised to the power of 4, that means 2 into 2 into 2 into 2. So this is what the logic behind ये maths की inventions हुई थी. This is what we did. हमने कहा कि एक ही नंबर को ऐड करी जा रहे हैं, हम एक ही चीज को कर रहे हैं, let it make it simplified. We added multiplication and we got a new concept. Now we realize that we are multiplying the same thing again and again. Then we got to know that what to do next. So we said, okay, we'll make it to the raised to the power. So this means that we are multiplying the same subset and we are not writing such big. Instead, just in one step, we can write it. That is what is all maths about. हमारी चीजें easy बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए maths की नई नई चीजें invent हो जाती हैं. So when you know the base, when you know what is happening, it becomes easy. Hi Deepika, hi Bidaishu. I hope I'm pronouncing your names good. So welcome to the platform and the chapter. So I hope you will get to know it. Okay, so easy. I hope you're getting it कि अगर हम एक ही नंबर को ऐड करें तो इतनी बारी लिखना पड़ता है, तो उसका शॉर्टकट बना के हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक ही नंबर को, तो बड़ा है उसका शॉर्ट बना के हमने रेज टू द पावर में एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस कर दिया. Simple as that. All right. Okay, so let's read. How can you read this question? Coming back to the class. Anyone who knows how can we read this one? It's raised 2 raised to the power of 5. So that means we are multiplying the 2 again and again. So हम 2 को multiply कर रहे हैं 5 times. So the things that is getting multiplied here, if you see the 10 जो नीचे होता है, right? So किसी भी चीज का क्या होता है नीचे? ये क्या है? बेस है, राइट? एक बिल्डिंग के ऊपर अगर हमें टॉप फ्लोर बनाना है तो नीचे क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए गाइस, राइट? बेस स्ट्रांग होगा तभी हम फर्स्ट फ्लोर डाल सकते हैं. सिंपल एज दैट, राइट? सिमिलरली इस नंबर्स में भी हमने जो नीचे नंबर होता है उसको बेस करते हैं ताकि बेस स्ट्रांग हो, और ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, और जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं 10 raised to the power of 2, 2 raised to the power of 5, where the top, the thing that's written on the top becomes the exponents and the thing at the bottom becomes the base. Simple as that. So exponents represents the power. So by saying that 10 raised to the power of 2, so 10 raised to the power of 2 becomes together, whereas 2 is the exponent. All right. So what do I mean? 10 raised to the power of 2 means 10 into 10. The value which I get. So if I ask about the value, what's the value of 10 raised to the power of 2? You'll say the value is 100, not 10 into 10. That's the way I express it. Okay. एक तरीका है लिखने का. इसका मतलब ये है. बट अगर वैल्यू की बात करी जाए तो हम लिखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 raised to the power 2? I'll say it's 100. All right. Similarly, what's the value of 10 raised to the power of 1? So 10 raised to the power 1, simple 10. So I can also write 100 over 10. So why am I doing it? I'll tell you in the next step. So 10 is the value. Simple. Now 10 raised to the power of 0, it becomes 1.
what is happening in these things I wanted to explain here is that see what has happened. मेरा एक power पहले कितना था 2 था, then it converted into 1. जब उसको 2 से 1 करा तो मैंने क्या करा, उसको डिवाइड बाय 10 करा, मतलब नीचे डिनोमिनेटर से 10 करा. दैट इज व्हाट आई डिड एंड आई गॉट द वैल्यू. ये 10 10 कैंसिल हो गया. जब मैंने उसको 1 वैल्यू दोबारा लेस करी, राइट, पावर में से 1 में से एक और कम करा, 0 करा, तो आई मेड इट डिवाइड बाय 10 अगेन. सो व्हाट डिड आई गेट? आई गेट द वैल्यू एज 1. अब मैंने 0 minus 1 is -1, तो दोबारा एक कम करा. दैट्स व्हाई आई डिवाइडेड बाय 10 and I got this answer. So this is what the logic is all behind, that says remember when the exponents are decreased by 1, the value becomes 1/3 of the previous value. इस केस में 1/3 है. अगर मैं 2 कर रही हूँ, पावर कम हो रही है, तो 1 second होगा. तो डिपेंडिंग ऑन द बेस इट विल गेट चेंज्ड. ठीक है, तो जितना बेस है उसका 1 अपॉन जो उसका नंबर होगा उसका वैल्यू वो कम हो जाएगा. As simple as that. Alright, so in this case we said it's 1/10. Now let's move to the definition. What is all about? हमने general overview ले लिया, but let's go back and understand the real terms and what does they mean. So by saying that, the definition and explain the base and the power. So if m is a positive integer, I hope we all know what are integers and what are positive integers. If not, let me repeat it. So integers are the numbers which are like natural as a whole, 0 1 2 3 4 5 6 7, all of them which are positive, 1 2 3 4 5 6 7 are positives, so we call it positive integers. Whenever we say -1 -2 -3 -4 are negative ones. So right now we are just talking about the positive integers. All right, so what it's saying that if m is a positive integer, then a multiply by a multiply by a up to m times. So जितनी बारी हम उसको multiply करेंगे, so a is known as the base and b is known as is called the power. So what do we say it? A raised to the power f is read as a power m, or it's raised as a is raised to the power m. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? By saying this, we want to say that it's a raised to the power of m. Can you see this? It's written as a raised to the power m, where a is the base, right, and m is the power or the exponent or the index that we are talking about. All right, okay, moving on to the next one. It says let us see how are we getting this and what are the things. So this is a visualization of where we get to know what are we doing and a question that you need to give me the answer. So everyone excited for giving me the answer? All right, so here we go with our first question. It says that index or the variable that we are talking is the power of the variable. So it's 13x raised to the power of 8. All right, so what does it mean? 13 को हम multiply कर रहे हैं x कितनी बारी multiply हो रहा है? 8 is multiplying 8 times by itself. So it's x into x into x into x into x into x. तो हम कितनी बारी x बोल रहे हैं? 8 में ही. Suppose it's 12, so it becomes a little more difficult. So that's why we have made it easy and just write it on the top of it. So 8 raised to the power of x raised to the power of 8. Now anyone who can give me the answers of this one, let's see. It says 5 multiplied by p multiplied by p multiplied by p multiplied by p multiplied by p. All right, so what do you think? What should I write in this box? Anyone who can tell me what should be here? What should I write on this box? Yeah, so I have made a little wrong. So this here should be the base. What do you think will be the base? And p should be here and this would be the power of p. So anyone who can tell me what can I write here? What can you think is the power base here? The base is 5. Superb. Very good. And what will the power of p? So p will be how many times it's getting multiplied? 1, 2, 3, 4 and 5. So that means the power will also be 5. So is it done? Yes, well done. We did the right one. All right. So moving on to the next one, it says, what is it? What is the index or the power? What is the index or the power? Power is 5. And what's the variable here? Variable कौन सा है? Variable जो है जिसकी proper term नहीं है. So anyone who can tell me what's the variable here? Yes, you are right. The variable is p. And what is a coefficient? Coefficient क्या होता है जो उसके आगे लिखा हुआ है? Can you see what's written in front? The coefficient here is, what is that, guys? Yes, it's 5. Very good. So we got that 5 is a coefficient, p is a variable, and 5 is the index or the power that we are talking about. Clear, guys? Okay. So that's it. And we can move on to the next one. Let's see anyone who can give me this answer. So let's see what are we doing. 11 multiplied by z into z into z into z into z into z.
All right, so reading it so many times. What do you think is the base, guys? Anyone who can tell me what's the base? Yes, that's good. It's 11. And what's the power of z? Z. So what's the power of it? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Right. So power is 6. Coming on to the indices or the powers, what is it? It's 6. What's a variable? Anyone who can tell me what's a variable? Yes, can you give me in the comments, please? I can read it. What's saying? What's a variable here? Z. Very good. And what's a coefficient? Yes, guys, what's a coefficient? 11. Very good. So that's the right answer. Correct, right, yes, and well done. Superb. All right, so let's go back. This is what we wanted, that you should know the clarity between what's a coefficient, what's a variable, and what's the power. So हमारे को इसके बीच डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए, exactly क्या होता है हमें पता होना चाहिए. All right, so let's move on to the laws of exponents. So first, laws क्या होते हैं? Laws are the things. जैसे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ क्या है? यूनिवर्सली सबके लिए इक्वल है. तो सिमिलरली या मैथ्स में भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बनाए हैं, जो कि एक वे है जो यूनिवर्सली ट्रू है. तो कुछ भी वैल्यू m की हो, कुछ भी वैल्यू ऑफ n की हो, उससे रिस्पेक्टिव हमारे पास आंसर्स वही आएंगे. Alright, so there are 3 types of laws of exponents. First is a product. Second is a coefficient law, and third is a power law. So we'll try to cover all of these 3 today in this session. So what is a product? Product का मतलब क्या होता है? Multiplication. Coefficients का मतलब क्या होता है? जिसमें division involve हो little bit. और power का law मतलब power के ऊपर power. So let's go into that and let's understand. All right. So here we go with the first topic that says product law. Product का मतलब अपने आप में मुझे पता है कि product मतलब क्या होता है? Multiply. Multiplication. Simple? Yes. इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? When we multiply the power having the same base, then just add the exponents. By saying this, that if I say a raised to the power of m into a raised to the power n becomes a is equals to m plus n. मतलब क्या है guys? अगर क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा multiply हो रहा है. Second चीज क्या है? The same base होना चाहिए. So the base a and a are same. I know both of them are same and they have some powers. So what do? We add them. इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ 2 raised to the power of 2 to be multiplied by 2 raised to the power of 4. चलो पहले इसी को ही देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं. Right? Can we do this? So what does this mean? 2 raised to the power of 2 means 2 multiplied by 2. Okay. 2 raised to the power of 4 का मतलब क्या है? Okay, let me put this in a bracket so you actually get to know what are we talking about. Okay, so 2 into 2, 2 raised to the power 4 मतलब है 2 को हम कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 4 times. So end of the day हमारा 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है guys? It's multiplying by 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. इसको मैं लिख सकती हूँ 2 raised to the power of 6. वही चीज वो ये कह रहे हैं जो कि हमारे से ऐसे डिराइव करा है, उसको इजी बनाने के लिए व्हाट दे सेड, अगर 2 raised to the power of 2 into 2 raised to the power of 4 है तो हम 2 raised to the power 2 plus 4 कर सकते हैं, which becomes 2 raised to the power of 6. 4 plus 2 is 6. डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ गया. See, it's true, but remember it should be 2, both of them to be 2. अगर मैं 2 raised to the power of 2 multiply by 3 raised to the power of 4 या 5 करूँ तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बेस क्या है? Cancel it. So what do I left? I left 2 to the power of 2, है ना? तो ये चीज मेरा आंसर आया. And this is what we want to say it in a different way. What are we saying? अगर 2 to the power of 4 है upon 2 to the power of 2 है, that becomes 2 to the power of 4 minus 2. तो हमने क्या करना है? बेस को एक ही बारी लिखो और ऊपर की पास को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो in case when we are dividing them. Okay, so now what do you get? You get 2 to the power of 4 minus 2 becomes 2. So 2 2s are 4 और यहीं पे मेरा आंसर भी 4 आ रहा है. This is how I am explaining you with the different ways, and this is what we are doing with the rule that has become, which becomes things smaller and shorter. अब गाइज इसके अंदर 2 रूल्स हैं. एक है m is greater than n and the another is n is greater than n. 2 रूल्स हैं, एक में m बड़ा है n से और एक में n बड़ा है m से. बट नाउ व्हाट टू डू, किस रूल को फॉलो करना है ये बहुत मुश्किल है. सो लेट मी सिंप्लीफाई दिस एंड लेट यू नो जब हमारे पास अदर वे अराउंड होता है तो क्या होगा. इसके अंदर सिर्फ हमारे को एक चीज ध्यान रखनी है, जब अदर वे अराउंड होगा ना, जस्ट रिमेंबर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द इंटीजर रूल्स, हम वो ही करेंगे. लेट्स सी 2 to the power. All right, so let me write with y. 2 to the power of 2 upon 2 to the power of 4.
दैट गिव्स मी 2 to the power of 2 minus 4, ये लिख सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 2 power 2 upon 2 into 4 times, right? हम ये लिख सकते हैं. I know these two gets cancelled. I'm left with 1 upon 2 into 2, which I can write 1 upon 2 to the power of 2. This is what I can write. So on doing this, what will I'll get? I'll get 2 to the power of minus 2. ठीक है, अभी तक हम यही समझते हैं, हम दूसरा कंसेप्ट नहीं पढ़ते, इसको -2 में ही रहने देते हैं. बिकॉज व्हाट आर वी डूइंग इट, वील अंडरस्टैंड दिस लेटर, व्हाई इज इट -1 एंड वील डू द रेसिप्रोकल, राइट? तो इसको हमें अगर अभी तक आपने पढ़ा होगा तो वी कैन ऑल्सो राइट इट 1 अपॉन में 2 to the power of 2, क्योंकि पावर इज नेगेटिव. नेगेटिव को हम न्यूमरेटर को नीचे ले जाते हैं और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं. दिस इज वन ऑफ द थिंग डन. इफ यू डोंट नो, डोंट वरी, विल अंडरस्टैंड दिस लेटर टू. सो इस वजह से मेरे को जो दोनों रूल्स हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली एक ही रूल से भी आ सकती हूँ. बट इन केस यू थिंक इट्स अ लिटिल ट्रबल फॉर यू, यू कैन लर्न बोथ ऑफ देम. बट आई ट्राई नॉट टू लर्न. मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ, ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है. अगर एक चीज से दूसरी चीज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रही है तो उसके रूल्स को याद करके अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज व्हाट यू सी हियर, a to the power of n minus 2, यहाँ पे सिंपल है. अब मैं यही कंफ्यूज हो जाऊँ कौन सा क्या था, तो उससे मैं एक ही को अपने साथ फॉलो करूँ और दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाए. So will not be my life easy? Yes, that's what I tell my kids, कि अपनी लाइफ को complicated मत करो. All right? Okay. Now moving on to the next one. Here M, N and A are all of them are integers. So remember that these are done in case of integers. When it's done in case of fractions, we do it something else. All right? So now what is it? Now let me explain. Okay, you want me to explain this power denominator wala? Don't worry, I'll do it again. Not a problem. Just a thing I'll tell you. Okay, let's start with that first, guys, so that you're connected, you know, and then you can learn it. So I'm taking this white space, a little bit of red board today. Okay, अगर मैं कहती हूँ 2 to the power of -1 और अगर मैं इसको लिखती हूँ 2 to the power of 1, तो गाइस कुछ तो फर्क होगा ना दोनों में. -1 और 1 में कुछ तो फर्क होगा, जिससे मैं इसको ये बता सकूं कि इनमें कुछ ना कुछ फर्क है, राइट? तो उस चीज का फर्क क्या है? 2 raised to the power of 1 क्या है? 2 ही है ना, क्योंकि 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब 2 अपने आप से ही मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एक ही 2 है. ठीक है, अगर मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये 2 to the power of 1 होता है ना. जब हम सिंपल 2 लिखते हैं, 2 to the power of -1 को 2 to the power of 1 लिख सकते हैं. नेगेटिव का मतलब होता है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाए, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाए, मतलब उल्टा कर दो. इसको उल्टा 2/1 को क्या लिखेंगे, 1/2 कर देंगे, तो नेगेटिव साइन गाइस हट जाता है, इसीलिए मेरा बन जाता है वो 1/2. इसीलिए जब इसको मैं -2 लिखूं और 2 लिखूं, दोनों में फर्क होता है, क्योंकि दोनों 2 रिप्रेजेंट नहीं कर. आई होप अब आई मेड इट क्लियर नाउ. यस, आई विल रिपीट अगेन. क्या कहने का मतलब है, सी गाइस, 2 to the power 1 का मतलब क्या है, 2 ही है. ठीक है ना, जिसका पावर नहीं दिया हुआ उसका मतलब 1 हो, मतलब वो ही है, उसका ना कोई फर्क नहीं है. अगर मैं नेगेटिव लिख रही हूँ, मतलब कि इसको 2/1 है ना, उसको उल्टा कर दो. जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना के हम ये नेगेटिव साइन को हटा के पॉजिटिव साइन कर सकते हैं. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू अहेड. थोड़ी और स्लाइड्स हैं, उसमें हम जाके ये चीज दोबारा भी पढ़ लेंगे. Alright, so now a to raised to power of m upon a raised to power n is equals to a raised to power m minus 1 if m is greater than n. Okay, so similarly यहाँ पे हमने क्या करा, 5 raised to the power of 3 upon 5 raised to the power of 2. So 5 raised to the power of 3 minus 2 जो बन जाता है 5 raised to the power 1. आंसर आ गया 5. अब वही चीज अलग लेते हैं, 5 raised to the power of 2 minus 3, सेकेंड वाले का यही आएगा, राइट? हमने यही रूल अप्लाई करा, क्या आया मेरा, 5 raised to the power of -1. अब 5 raised to the power 1 और 5 raised to the power 5 अलग है, अलग है ना. तो अलग का मतलब क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5/1, तो उसको मैं लिख दिया 1/5. सो इससे से मेरा ये आंसर आ गया, तो मुझे ये लर्न करने की जरूरत नहीं है. Okay, so simple कर दिया काम. That's what this platform Swiflearn does. It makes the things more easy and understandable, not to make the things complicated for you. ये तो मुझे नेगेटिव वैसे भी पता ही होना चाहिए, ये तो जरूरी है, क्योंकि मैं कितने क्वेश्चन में अलग भी यूज करूंगी. तो जितनी नॉलेज मुझे है, अगर उससे मेरी ऑटोमेटिकली चीजें सॉल्व हो रही हैं, तो एक्स्ट्रा क्यों कॉम्प्लिकेट करनी लाइफ, राइट? ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स विजुअलाइज इट. Okay, so now let's see, what does it say? 2 raised to the power of 3 minus 2 raised to the power of 7. So what will be the answer, guys? Anyone who know?
So 2 raised to the power 3 डिवाइड बाई 2 raised to the power of 7. So अगर 2 raised to the power of 3 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में करूँ जो हम नॉर्मली करते हैं विदाउट यूजिंग, तो उसको मैं 7 टाइम लिखती हूँ. 2 3 4 5 6 7. सो ये 3 टाइम्स 3 कट गया तो मैं बचा 1 2 to the power of 4 बना. यही चीज़ यहाँ देखते हैं. अब मैंने क्या करा है, 2 raised to the power 3 minus 7. क्या आया मेरा आंसर? 2 raised to the power of -4. माइनस का मतलब क्या है कि मेरे को रेसिप्रोकल उल्टा करना है, मतलब 1/2 to the power of 4 हो जाएगा नेगेटिव हटाने के लिए. अब वो करा तो 1 to the power of 4 मतलब 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा गाइस, है ना. मतलब 2 raised to the power of 4 हमारे पास आंसर में बचा. Alright, so let's see have we got the right answer or not. Yes, can you see that? We got the right answer. Let's change it to another question and make a little more power. To 5 and नीचे वाला power को अब कम कर देते हैं. Let's see that. So what will happen? So 2 raised to the power of 5 divided by 2 raised to the power of 3. Basis same है तो powers क्या होंगी? Subtract हो जाएंगी divide में. So 2 raised to the power of 5 minus 3 becomes 2 raised to the power of 2. So that should be 4, right? 2 into 2 is 4. So let's see, have we got the right answer? Simple, easy, right? अब से easy हो गया life. So see, now you get to know कि एक ही चीज़ को use करके मेरे पास दूसरा आंसर भी आ रहा है. I'm not making your life complicated by making you learn both the formulas. We can just work with one. Okay? And don't get confused with it. All right. Moving on to the next activity which we have with this. Let's see what are stored for us. So exploring positive and negative inverse and indices. What it says कि अगर मेरी पावर, यानी सी दैट बेस मेरा 3 है, पावर मेरी नेगेटिव है. जब नेगेटिव होती है तो हम क्या करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू दैट आई विल एक्सप्लेन यू. सी, अगर मेरी पास जब भी नेगेटिव में है तो मेरे को रेसिप्रोकल पहले करना है, उसके बाद उस पावर को मैं मल्टीप्लाई करके उसके आंसर लेके आऊंगी. तो फर्स्ट थिंग इज टू रेसिप्रोकल इट. सो अगर 3 raised to the power of -5 है तो पहली बात है वो 3/1 raised to the power of -5 भी लिख सकते हैं ना. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 तो ऑटोमेटिकली होता है, वो हम रिमूव कर देते हैं. ये तो हमारे अंडरस्टूड फ्रैक्शंस में हम कर ही चुके हैं. सो इसीलिए जब माइनस साइन को हटाना है तो मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा. उल्टा करना पड़ेगा मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ऊपर, न्यूमरेटर को नीचे. ठीक है, वो करा और उसी से टू द पावर ऑफ 5 में मेरे पास ये एक्सपेंडेशन आ गया. आई होप इट्स क्लियर नाउ. यस, इज इट इजी? यस, ओके. और अगर मेरे पास सिंपल बेस में पॉजिटिव ही है तो वो वैसे ही रहेगा. इसीलिए नेगेटिव साइंस दोनों चीज को डिफरेंशिएट करती है. मुझे ये पता चलता है कि वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है. सिंपली नेगेटिव साइंस से हमें चीजें फर्क हो जाती है. Alright, so that's it. So let's understand the topic and get to it. So here we go with the topic. It says power law. Power law क्या करता है? पावर के ऊपर पावर फ्लोर के ऊपर फ्लोर है. सिंपल बेस की बात कर रहे थे ना, तो हम पावर उसके ऊपर होता है तो उसके ऊपर एक और पावर है, मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर भी है. तो अब इन केसेस में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वील अंडरस्टैंड दिस. ऑलराइट गाइस, सो इफ यू ऑल आर बीइंग कनेक्टेड एंड यू थिंक दैट यू आर लर्निंग समथिंग गुड, सो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन, जो जब नेक्स्ट अपडेट आए तो आप साथ में कनेक्ट हो सको और हमारे साथ नई चीजें सीख सको. So when the power of a number is raised to another power, मतलब एक फ्लोर के ऊपर एक रेस के ऊपर एक फ्लोर है, उसके ऊपर दूसरा फ्लोर भी है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम जो इंडिसेस हैं उनको ही मल्टीप्लाई कर देंगे. By saying this, what do I mean? अगर मैं 2 to power 2 raised to the power of 3 की बात करती हूँ, जो यहाँ पर है, डायरेक्टली आंसर मैंने दिखा दिया है 2 raised to the power of 6, बट पहले उसको एक्सपैंड करके समझते हैं कि आया कैसे. ऑलराइट, सो व्हाट डज दिस मीन? पहले तो 2 raised to the power of 2 का मतलब क्या है, 2 into 2 raised to the power of 3. अब इसका ब्रैकेट पावर है, मतलब ये 2 raised to the power of 3 भी है और into 2 raised to the power of 3 भी है. Now I know when bases are same the powers can be added. जो हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी थी, मल्टीप्लिकेशन की लॉ यूज किया था, अभी किया था ना हमने, प्रोडक्ट लॉ. So that means that we can say 2 raised to the power of 3 plus 3. We got the value 2 raised to the power of 6. तो इसीलिए हम इस चीज को दोबारा अगर प्रोडक्ट में लेके जाएं तो उसको हमने और सिंप्लीफाइड करके एक पावर लॉ बना दिया कि अगर जब भी कोई चीज का गाइस ये पावर के ऊपर पावर है, 2 पावर है, उसके ऊपर 3 पावर है, तो कुछ भी मत करो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, डायरेक्टली 2 raised to the power of 6 will be the answer. Clear? So this is all the identities and the rows are, and we are using these indices and we'll solve it. The power of the product row, if the base are different but have the common power of the exponents as n, then we multiply the base and rise as a common power.
अब इसका मतलब क्या है, पार लॉ दो तरह के हैं। पहला हमने क्या करा, एक ही बेस है, उसके पार के ऊपर पार है, तो हमने क्या करा, पार्स को ही मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, बेस के ऊपर। नाउ नेक्स्ट सेज इज, अगर मेरा 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 3, अब मेरे पास जो फर्स्ट फ्लोर है वो सेम है, बट जो बेसिस हैं वो दोनों अलग है। देन व्हाट डू आई डू, मैं फर्स्ट फ्लोर को कॉमन ले लेती हूँ और मैं क्या करती हूँ, बेस को ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो हियर आई विल गेट 6 raised to the power of 3. This what this logic says. It says that a raised to the power of n, b raised to the power of n. Now bases are different, but the powers are same. We'll multiply the base inside the bracket and write it raised to the power. All right. So this what the logic is. Don't worry. We'll understand this little more. It's like we'll give you another example. 2 raised to the power of 2 into 3 raised to the power of 2. 2 and 3 are different bases. अलग है. बट पावर जो दोनों की है रेस टू द पावर 2 ही है, तो इस केस में पावर्स को इकट्ठे ले लिया, नीचे बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया और वील गेट द आंसर्स। सो डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स हैव डिफरेंट बेसिस। नाउ अनदर पावर ऑफ कोफिशिएंट सेज दैट ए और बी है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जब मल्टीप्लाई कर रहे थे पावर्स सेम है, तो हमने क्या करा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर्स को कॉमन ले लिया। सिमिलरली जब डिवाइड में होता है और पावर्स दोनों सेम होती हैं, तो हम उनको डिवाइड के लिए ब्रैकेट में इकट्ठे डाल देते हैं और पावर प्रॉपर कर देते हैं। सो बाय सेइंग दैट 2 raised to the power of 2, 3 raised to the power of 2, 2 upon 3 हम पूरा एक फ्रैक्शन ले लेंगे, पावर टोटल ब्रैकेट पे डाल देंगे। आई होप इट्स क्लियर। Alright, so now let's understand this with others laws of exponents too, and then we'll go. Exponents of 0, a raised to the power of 0 is 1. चलो ये बात बहुत इजी स्टोरी से मैं बता देती हूँ। एक मैं ह्यूमन हूँ, मेरा बेस है, मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, मैं सिंपल हूँ, एक ह्यूमन भी हूँ, एक बच्चा भी हूँ, मेरे में कोई पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कुछ कर पाओगे जब तक पावर नहीं आएगी, खाना नहीं खाया, पावर नहीं आई, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो क्या करेंगे, बेड पे हम लाई करते रहेंगे, सिंपल एज दैट। सिमिलरली नंबर्स की जब पावर हमारे पास 0 होती है, 1 भी नहीं है, 1 में हम ऐसे हैं जो नॉर्मल है, 2 में हमारी एनर्जी बढ़ रही है, 3 में और ज्यादा बढ़ रही है, बट 0 मतलब नॉर्मल जो मैं रहती हूँ, मेरी हेल्थ नॉर्मल होने से भी बहुत लो है, मतलब 0 है, जबकि मेरे को फीवर हो रहा है, तो क्या मैं उठ के इतना एनर्जेटिकली वर्क कर सकती हूँ? नहीं। सो जब भी पावर 0 होगी, जब मेरे में कोई एनर्जी नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली वैल्यू 1 के इक्वल हो जाऊँ। Simple as that. Okay, so any base raised to the power of 0 becomes the value as 1. Moving on to next one, it says fractional exponents. अभी तक हमने किया था जब -1 होता है तो हम रेसिप्रोकल करते हैं, बट जब हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में, अगर मेरे बेस के ऊपर एक फ्रैक्शन है, बाय सेइंग दिस इफ आई मीन कि अगर 2 की पावर फ्रैक्शन है मेरे पास, रेज टू द पावर 2/3 है, जो 3/2 है जैसे मैंने लिखा है, तो पहले उसी को देखते हैं। जो नीचे होता है ना गाइस, इसको हम बनाते हैं स्क्वायर रूट निकालने का। ये क्या है, 2 है तो स्क्वायर रूट, अगर 3 है तो क्यूब रूट, तो 4th रूट, 5th रूट, ये मेरा रूट बन जाता है। ठीक है, तो इस केस में मैंने देखो जब ये y लिखा है तो मैंने बोला y वाला रूट ऑफ a, और ये मेरा पार ही रहता है। न्यूमरेटर बिकम्स द पार एंड डिनोमिनेटर बिकम्स द रूट। कौन सा रूट निकालना है? Let's understand this example that's given to us. 5 raised to the power of 2/3. तो 3 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 raised to the power of 2. अब जो एग्जाम्पल मैंने लिया उसकी बात कर लेते हैं। 2 raised to the power of 3/2 मतलब स्क्वायर रूट आ रहा है, क्योंकि नीचे है तो स्क्वायर रूट है, और 2 raised to the power of 3 हो जाएगा। क्लियर? सो जो ऊपर होता है वो हमारा न्यूमरेटर जो होता है, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा पार ही रहता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा रूट बन जाता है, मतलब उसका रूट्स निकालते हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, 4th रूट, 5th रूट, ऐसे हम डिफरेंट रूट्स निकाल सकते हैं। जनरली स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स में ही क्वेश्चंस देते हैं ताकि हम उसकी वैल्यूज निकाल सकें। Alright, so that is the difference, and that is what अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो। Any non-zero number raised to the power of 0 is always equals to unity stands for 1। तो किसी भी चीज का जो मैंने अभी एग्जाम्पल ही दिया था कि अगर मेरे पास पावर बिल्कुल ही नहीं है तो मैं लाई डाउन ही करती रहूंगी, तो इसलिए मेरी वैल्यू सिर्फ 1 हो जाएगी, डिपेंड नहीं करेगा मैं कितनी स्ट्रांग हूँ या मैं कितना क्या हूँ। Alright, so now let's simplify the expansions. Anyone ready? Okay, so it says 27 raised to the power of -1/3. So let's see what it says. 27 raised to the power of -1/3. So पहले तो 3 है तो हमारा इसका मतलब क्या होता है, और नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या होता है। नेगेटिव का मतलब क्या है गाइस, कि मेरे को उसको ऑपोजिट करना पड़ेगा, सिंपल। तो अगर मैं नेगेटिव को करती हूँ उसका मतलब है 1/27 raised to the power of 1/3।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि मैंने क्या करा, उसका उल्टा कर दिया न्यूमरेटर, क्योंकि ये 1 था तो उसको मैंने उल्टा करके अदर वे राउंड कर दिया। ओके अब क्या है, ये डिनोमिनेटर में 3 है। कैन यू सी इट्स डिनोमिनेटर, मतलब क्या है, क्यूब रूट है। देन इट्स मीन्स कि मुझे क्यूब रूट निकालना है किसका, 1/27 का, राइट मुझे ये निकालना है। 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 into 1 into 1 is 1, तो उसका क्यूब रूट भी 1 होता है। सो आई नो इट्स 1, सो आई कैन राइट इट सिंपली लाइक दिस। पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अपॉन में मैं क्या लिख रही हूँ, 3 into 3 into 3, right? So I know it becomes cube root में 1/3 is the answer. So this way you can solve it, जो simplified way है, which makes it easy. The other way where I'm using some more rules और मैं उसको simplify कर रही हूँ, तो मैंने क्या करा, 27 है, मैं 3 to the power of 3 लिख सकती हूँ। अब मुझे पता है यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, जब पावर्स आपस में क्या हो रही है, रेस टू द पावर है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पावर लॉ से। पावर लॉ से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और मेरा 3 और 3 कैंसिल हो गया, मेरा बचा 3 रेस टू द पावर ऑफ -1 जो कि हो गया 1/3। सो नाउ सी, अगर मैं लॉज यूज कर रही हूँ तो मेरे को इतना चीजें नहीं करनी पड़ी, मैं क्विकली आंसर्स पे आ रही हूँ। अगर मैं लॉज नहीं यूज कर रही तब भी मैं डायरेक्टली आंसर्स पे आ सकती हूँ। दिस इज द 2 ways दैट यू कैन फॉलो एंड यू कैन गेट द आंसर्स। इट्स अप टू यू कि आप चूज करना चाहते हो। Alright guys, so now next one I want the answers from you. So you have seen one question, you have to give me the answer for this one. How will you do? चलो देखते हैं कौन पहले बताता है कि हमें आंसर्स क्या आया इसका। So I'm doing it on my own. Till that time you can do it and you can let me know what will be your take and what will be your answer. So पहली बात तो 9 raised to the power of 3/2 है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 को मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालना है with the power of 3. I hope you know this. Right? You all know it? Okay, great. So पहली बात तो अगर यहाँ पे मैं पावर ना लिखूं, मैं इसको all power 3 लिखूं तो कुछ फर्क होगा नहीं होगा, राइट? अब मेरे को पता है स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है गाइस, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, मतलब 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 आ गया इससे आंसर। तो वही चीज मैं यहाँ लिखती हूँ, 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 -3। अब मुझे पता है एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 1, so I'll write the bracket 1 minus, अब क्या है यहाँ नेगेटिव साइन, तो मेरे को पता है इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब 81 to the power of 1/2। आई होप इट इज क्लियर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। अभी तक गाइस मैंने क्या किया, आई जस्ट रोट 9 इक्वल टू 3 रेज टू द पावर ऑफ 2, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 5 रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 1, और जो नेगेटिव रेसिप्रोकल है इसको मैंने हटा दिया। गाइस इफ यू अंडरस्टैंडिंग इट एंड यू लाइक इट एंड यू वांट टू जॉइन द नेक्स्ट सेशन, आपको लगता है कि बहुत ईजी कर रही है मैम, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू नो व्हेन आई एम कमिंग अप विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट एक्सटेंशन टू दिस सेशन, नेक्स्ट इसका कब आएगा। सो नाउ व्हाट डू आई सी, जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बचा, 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 -3 into 1 is 3, और मैं इसको लिख सकती हूँ 9 रेज टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 1/2, जो कि मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी और मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 रेज टू द पावर ऑफ 1 बन जाएगा। एनीवन नोज व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू द पावर ऑफ 3? 3 3s are 9, 9 3s are 27. Superb. So it's 27 minus 3 minus 9. Right? So which gives me 27 minus of 12. So what's the answer, guys? Anyone who can give me, who has solved this and knows 27 minus 12 is? What is it? What's the answer? Yes, the answer is 15. So let's see, have we got the right answer or not? Were we able to solve it? So yes, we got the right answer. Well done, students. I think it's very easy. I'm telling you how are we doing and we are solving it. Let's move to the next one. We have to simplify 27 raised to the power 4/3 plus 32 raised to the power 8, 0.8 plus 0.8 to the power of -1. So now the things are coming complicated. Very good, Abeg. You get the right answer. Sorry, I saw it later. Well done. So let's do with the next one, guys. I can see so many students say, why don't you comment and give me the answers that you've understood or not? And if you think that I need to repeat, अगर लगता है कि मैं दोबारा बता दूं कि आपने मिस कर दिया, तो let me know. I'll explain it to you again. All right. So here we go. It says 27 raised to the power of 4/3. तो मुझे पता है 27 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 27 can be written as 3 raised to the power of 3.
सो मैंने वही लिखा 3 raised to the power of 3 upon 4 raised to the power of 3. अब 3 और 3 मेरे क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि 3 raised to the power of 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 by 3 जो मेरा पावर लॉ है, जिससे कट के मेरे पास आ गया 3 raised to the power of 4. सिमिलरली यहाँ पे बात करते हैं 32 को मैं कैसे लिख सकती हूँ. सी अब मुझे जिससे 32 बड़ा नंबर है मुझे नहीं पता, तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन फैक्टराइज. सो 32 लिया, 2 से फैक्टराइज करा, व्हाट डू आई लेफ्ट, 1 ज़ा 2 एंड 6 ज़ा 12, 2 करा 8, 2 करा 4, 2 करा 2, 2 करा 1. Simple. So what I'm getting 1, 2, 3, 4, 5. So that is why I've written 2 raised to the power of 5. और 0.8 को लिख सकती हूँ 8 by 10 और 0.8 को 8 by 10 to the power of -1. -1 है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट विल बी 10 by 8 एंड यहाँ से मेरा 5 कैंसिल करके कर देगा 2, इसको कैंसिल करके कर देगा 4. तो मैंने डायरेक्टली 2 raised to the power of 4 लिख दिया. Alright, so now I know you know how to calculate 3 raised to the power 4, you know how to calculate 2 raised to the power 4, and you know how to divide, and you will get the answer. Alright, I hope it's easy. है ना, सिंपल गाइज, वैल्यूज पुट करनी है और बस ये याद रखना है कि पावर लॉ में पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करना है, माइनस है तो रेसिप्रोकल करना है. सिंपल एंड प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके हम फैक्टर्स टू द रेज़ टू द पावर्स में निकाल सकते हैं क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में आते हैं. Alright, so anyone who can do this, let's solve this question together and get one answer. This would be the last question for today, so I want a lot of answers from you so that you can practice it, and later on when I'll come with the next session and we'll practice some more questions, little more tricky ones. Alright, so let's see who all can give me the answers. What can I write 27 as? I can write it at 3 raised to the power of 3, right? So I'll write 3 raised to the power of 3 multiplied by 1 by 3, right? I can write it, bracket. 3 raised to the power of 3 multiplied by 1 by 3 minus 3 raised to the power of 3 multiplied by 2 by 3. Simple as that. Now what I'm doing, I'm changing the color to show you the difference. This 3 and 3 are getting cancelled. This 3 and 3 are getting cancelled. 3 and 3 are getting cancelled. So what I'm left with, 3 raised to the power of -1 upon 3 raised to the power of 1 minus 3 raised to the power of 2. So let's do it. 3 raised to the -1 becomes 1 by 3. 3 minus of 9. So what is it? It becomes 1 by 3 bracket of -6. So what is 1 by 6? And -2 becomes -2 is the answer. I hope that should be the answer. Anyone? Everyone who were able to do it? Yes, can I see in the comments? Yes, thumbs up. No, ma'am. Any comments, guys? Okay, so let us see is whatever we have solved is the right answer or not. And well, that's the right answer. Okay guys, so that's it for today. I know I could not do much of the practice and there were some technical issues, but I'm really very sorry. I'm very sure I'll come back in the next session with a lot of practice where you can practice and give me the answers, and for that you have to be connected. So where I am not telling you, it's a suspense or a surprise that I'll give you, which will come to you when you will subscribe to the channel and press on the bell icon. So यहाँ पे टीचर्स नहीं बताएंगी वो कब आएंगे, ये बेल आइकन ही आपको बताएगा कि नेक्स्ट सेशन कब आने वाला है और आपको कैसे फ्री रहना है. तो 1 day पहले आपको बेल नोटिफिकेशन आ जाती है and you can be free. Well done, Abe. Thanks a lot for giving me and being connected. Hope to see you in the next session with lot of new questions and we'll make the difficulty level more. So, जो स्कूल में questions difficult वाले पूछे जाते हैं वहाँ से शुरू करेंगे और understand करेंगे step wise और reasoning हमें क्या क्या देनी है. Alright guys, I hope you will be connected and you're subscribed it and press on the bell icon. Till then guys, take care and bye-bye.